Jai Radha Madhava Kunjare Gopijana Vallabha Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Prabhupada,
Paramahamsa Privrajacharya Stodra Shachi Shima Tridandi Goswami Abhay Chanaravinda Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Grandaraj Shimad Bhagavatam Ji. All glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to Shri Guru and Gauranga. Who will translate? Стих у них есть, да, или нет? Стиха нету, да, доски? Или есть доска? Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. So today we are reading the fourth canto, chapter 5, frustration of the sacrifice of Daksha, verse 21. The verse is there? Okay. Okay. Pushnahya pataya dantam Pushnahya padaya dantam Kalingasya yatha bala Kalingasya yatha bala Sapyamane garimani Sapyamane garimani Yohasan darshayandata Yohasan darshayandata Pushnohya padayanantam Kalindasya yatham Sapyamane garimani Yohasan darshayandata
क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति इतना शक्तिशाली था और वैदिक मंत्र द्वारा अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना चाह रहा था। अतः दक्ष के यज्ञ में विभिन्न पक्षों द्वारा युद्ध कौशल का अच्छा प्रदर्शन हुआ। Om Vishnu Pada Krishna Prasthaya Bhutale Shrimati Bhakti Vedanta Swami Namaste Saraswati Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Om Agyana Timirandasya Gyananjana Shokaya Chaksuram Militamina Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Stavidam Yena Bhutale Swayam Rupakvadam Mahyam Dadati Swavadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Gurun Vaishnavasya Shri Rupam Sagra Jatam Sahagna Raghunatham Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Hey Krishna Karuna Sindhu Dinabando Jagatpate Gopisha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Rishabhanu Sutadevi Pranamani Haripriya Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Cha Patitanam Panebhyo Vaishnavyo Namo Namo Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasari Gaur Bhaktavinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare. So we are reading chapter 5, frustration of the sacrifice of Daksha. हम अध्याय 5 का अध्ययन कर रहे हैं दक्ष के यज्ञ का विध्वंस। And we are coming to the culmination of the story. और इस कथा का अंतिम भाग चल रहा है। In the next verses, it will be described how Virabhadra was trying to kill Daksha. आगे अगले श्लोक में बताया जाएगा कि कैसे वीरभद्र दक्ष को मारने की कोशिश कर रहा है। And this verse is describing the consequences that were received by Dantavakra. और ये श्लोक वो परिणाम को बता रहे हैं जो दंतवक्र को हुए थे पहले हिस्से में। The story of sacrifice performed by Daksha has many lessons. ये जो कथा है दक्ष द्वारा यज्ञ करने की, इसमें बहुत सारी शिक्षाएं हैं। One of the lessons is what will happen to the person who makes an offense to great soul. एक शिक्षा ये है कि ऐसे व्यक्ति को क्या परिणाम मिलता है जो महान आत्माओं के चरणों में अपराध करता है। Like Dantavakra, he lost his teeth जैसे कि दंतवक्र उसने अपने दांत खो दिए because he was laughing at Lord Balaram's. क्योंकि वो बलराम जी की पर हंस रहा था। The story is described in the 10th canto. ये कथा श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद में आती है।
king of Kalinga, Damtavakra, he inspired Rukmi to play chess with Lord Balaram. कलिंग राज दत्तक वो बलराम जी के साथ युद्ध क्रीड़ा करने लगा। And when Lord Balaram was losing, he was laughing and showing his teeth. बलराम जी हार रहे थे उस खेल में, तो वो अपने दांत दिखा रहा था, जोर जोर से हंस रहा था। So at some point, Lord Balaram became very angry with his club. तो बस कुछ समय बाद बलराम जी को गुस्सा आ गया, उन्होंने अपनी गदा ली और And this is the consequences of an offense. ये परिणाम था उसके अपराध का। One can lose his teeth, उसने अपने दांत खो दिए and also one can lose his head. और यहाँ पर मृत्यु हो जाएगी किसी की, Like Daksha lost. जैसे कि दक्ष। So there are many stories describing the consequences of offenses. ऐसे बहुत सारी कथाएं हैं जिसमें अपराध के दुष्परिणाम का वर्णन आता है। Next story will be described in this canto, the story of Dhruva Maharaj. इसी स्कंद में आगे ध्रुव महाराज की कथाएं हैं। His stepmother, she offended him. उसकी सौतेली मां ने अपराध किया ध्रुव महाराज के चरणों में। And what was the result of this offense? और उस अपराध का परिणाम क्या हुआ? Who remembers what was the result of the offense that was done by stepmother? हम जानते हैं कि उसकी सौतेली मां ने जो अपराध किया उसका परिणाम क्या हुआ? What happened to this stepmother afterwards? क्या हुआ उसकी सौतेली मां Who को? remembers this story? किसी को ये कथा याद है? What happened to the stepmother of Dhruva Maharaj? कि उसकी सौतेली मां को क्या हुआ? Forest fire, yeah. She was burnt in the forest fire. वो एक दावानल में जल गई थी And her son also died. और उसका पुत्र भी मर गया। He was killed by the yakshas. यक्षों ने उसको मार दिया। So it's very dangerous to commit an offense against a great soul. तो महान व्यक्तियों के चरणों में अपराध करना बहुत ही खतरनाक है। There are many instances in Srimad Bhagavatam what happens with a person who commits great offense. श्रीमद् भागवत में ऐसे बहुत सारे कथाएं हैं कि महान व्यक्तियों के चरणों में अपराध करने से क्या परिणाम होता है। And we can observe this in our day-to-day life. If someone commits an offense, he will get a result. और हम ये आज के समय में भी देख सकते हैं कि कोई अगर अपराध करता है तो उसको परिणाम मिलता है। It may take time, the result is not coming immediately. समय लग सकता है उस परिणाम को आने में, तुरंत नहीं आता होगा। That's why we are thinking that there is no consequences. और चूंकि वो परिणाम नहीं आता तो हमको ऐसा लगता है कि कोई परिणाम नहीं होगा। It may take many years when the result will come. लेकिन बहुत वर्षों बाद शायद उसका परिणाम आएगा। So we can stay in illusions that there is no result. तो हम इस भ्रम में रह सकते हैं कि ऐसा अपराध का कोई परिणाम नहीं। I can commit offenses and there will be no result. कि मैं अपराध कर सकता हूँ लेकिन कोई परिणाम नहीं होगा इसका। But Srimad Bhagavatam is showing us very vivid examples. लेकिन श्रीमद् भागवत बहुत ही अच्छे उदाहरणों के साथ इस तथ्य को प्रस्तुत कर रहे हैं। So if we have faith in Srimad Bhagavatam, we should learn this lesson. तो अगर हमारी श्रद्धा है श्रीमद् भागवत में तो हमें ये शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए That we should not commit an offense against great souls. कि हमें महान विभूतियों के चरणों में अपराध नहीं करना। This is one of the lessons ये उसमें से एक ऐसी शिक्षा है from this story. इस कथा की। Another lesson, Srila Prabhupada is giving very interesting point in this purport that there was no actually enmity between the two parties.
एक और बहुत ही रोचक शिक्षा प्रभुपाद जी इस तात्पर्य में दे रहे हैं, वो ये है कि जो दो दल थे, इनके बीच में कोई शत्रुता नहीं थी। And Srila Prabhupada is giving an example of the Kshatriyas. अब वो क्षत्रियों का उदाहरण दे रहे हैं। When they had uh, some rivalry between them, they were fighting. तो कैसे क्षत्रिय आपस में लड़ते हैं, युद्ध करते हैं। And Srila Prabhupada is saying that actually they are not inimical to each other, they just want to show their power. ऐसा नहीं कि उनके मन में एक दूसरे के प्रति शत्रुता है, बस वो एक दूसरे का बल वो दिखाना चाहते हैं, उसका प्रदर्शन करना चाहते हैं। And Srila Prabhupada is saying that actually there was no enmity between these two parties, party of Daksha and party of Shiva. They just wanted to show their power. तो उसी प्रकार से ये जो दो दल थे, शिव जी का और दक्ष प्रजापति का, इनमें आपस में कोई शत्रुता नहीं थी, बस ये एक दूसरे के शौर्य को बल को दिखाना चाहते हैं। So it's not a fact that when two parties are fighting, that there is an enmity between them. तो ऐसा नहीं हमेशा कि दो दल अगर आपस में झगड़ा है तो इसके लिए उनमें शत्रुता है। Like Bhrigu Muni, he wanted to show the power of mantras and he created these demigods. जैसे कि भृगु मुनि, उनको मंत्रों का बल या उसकी ताकत दिखानी थी, तो उन्होंने बहुत सारे जीवों को उत्पन्न कर दिया देवों के समान। And from the yagya appeared a whole bunch of these the demigods, and they chased away the army of Lord Shiva. और उस कारण से उस यज्ञ अग्नि से इतने सारे देवता प्रकट हुए और उन्होंने शिव के अन्य को वहां से भगा दिया। So mantra has very great power, तो मंत्र में बल होता है, बहुत ज्यादा बल। and especially Hare Krishna mantra has very big power. विशेषकर हरे कृष्ण महामंत्र में बहुत ज्यादा बल है। But the question is how it can become manifested, this power, how it can become manifested. लेकिन प्रश्न ये है कि वो जो शक्ति है, बल है उसमें, वो प्रकट कैसे होगा? Because we are chanting maybe for many years and we don't see like great effect. जैसे कि हम बहुत वर्षों से जप कर रहे हैं, लेकिन शायद हम उसका परिणाम नहीं देखते। So what is wrong? तो क्या गलत है? These questions. What is wrong? Why you don't see great effect? ये प्रश्न है हमारा आपसे कि इतने वर्षों के बाद जप करने के बाद भी उसका हमें परिणाम क्यों नहीं दिखता? कोई बहुत बड़ा परिणाम नहीं दिखता, क्या कारण हो सकता है? How many years are you chanting? कितने वर्षों से आप जप कर रहे हैं? 20 years. 20 years. Mhm. 12 years. How many years are you chanting japa? 25. 25 साल। So my question is, we are chanting for many years, but very often we don't see the result which is promised in the Shastra. तो हम इतने वर्षों से जप कर रहे हैं, लेकिन शास्त्र में जो परिणाम बताया जाता है कि ऐसा होगा, ऐसा हम नहीं देखते। So what is the reason कारण क्या है? why we don't see the result? There's so many promises are there. If you are chanting, you will get this, you will get this, that. शास्त्र इतने सारे वादे करता है कि ये मिलेगा, वो मिलेगा जप करने से। Why, क्यों नहीं मिलता है? why we don't see the result? क्यों परिणाम नहीं दिखते हैं? अपराध के कारण। Yes, offenses. There are 10 offenses that can be committed while chanting. जी, आपने सही कहा, अपराधों के कारण 10 अपराध हैं जो नाम जप के दौरान हो सकते हैं। And first offense is Vaishnava aparat. और जो पहला अपराध है वो है वैष्णव अपराध। And this story is showing why Vaishnava aparat is so dangerous. और ये कथा बता रही है कि कैसे वैष्णव अपराध बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। And many other aparats are there. और इस वैष्णव अपराध के अलावा और भी बहुत सारे अपराध हैं। And one of them is
Inattentiveness. और उसमें से एक अपराध है कि बिना ध्यान पूर्वक जप करना। If we are inattentive while chanting, we will not get the result. अगर हम ध्यान पूर्वक जप नहीं करते हैं तो हमें परिणाम नहीं मिलेगा। And Shastras, they are calling this pramada. और शास्त्र इस समस्या को, इस रोग को प्रमाद कहता है। Pramad means madness. प्रमाद का अर्थ है पागल। If we are chanting the names of Krishna, means we are addressing him. अगर हम कृष्ण का नाम ले रहे हैं इसका अर्थ है हम कृष्ण को पुकार रहे हैं, We are calling him. कृष्ण को बुला रहे हैं, Please come. कृष्ण आओ। At the same time, we are turning our attention to something else. और हम कृष्ण को बुलाकर अपने ध्यान को कहीं और लगा रहे हैं। So it's an offense when we are calling someone and we are turning attention to somebody else. तो ये तो अपराध है कि हम किसी को बुलाकर फिर अपना मुख वहां से घुमाकर कहीं और देखने लग जाए, कुछ और करने लग जाए। So we have to learn how to chant attentively. तो हमें ये सीखना है कि कैसे ध्यान पूर्वक जप करना है। But attentiveness, it's not our goal. It only means. लेकिन ये भी हमें समझना है कि ध्यान पूर्वक जप करना ये हमारा साध्य नहीं है, ये केवल एक माध्यम है, साधन है। Because yogis, they very concentrated. जैसे कि योगी वो उनका ध्यान बहुत गहरा होता है, They are doing this asanas, pranayama, and their mind is very fixed. वो आसन करते, प्राणायाम करते, उनका मन स्थिर होता है, But they are not getting the same result as devotees लेकिन उनको वही परिणाम नहीं मिलता जो भक्तों को मिलता है, because they have another purpose. क्योंकि उनके ध्यान का उद्देश्य कुछ और है। So concentration is just the means to attain the goal. तो इसका अर्थ ये है कि केवल बहुत अच्छा ध्यानी बनने से, बहुत अच्छा आपका मन में स्थिरता होने से आप उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं करेंगे। But what is our goal in chanting? तो हमारा क्या लक्ष्य होना चाहिए जप करने का, नाम जप करने का उद्देश्य क्या होना चाहिए? What is the goal? क्या है वो लक्ष्य? We want to chant with love. हम प्रेम के साथ कृष्ण का नाम लें। Yes. Our goal is Prem Sankirtan, हमारा लक्ष्य है प्रेम संकीर्तन, not only concentration like yogis. केवल ध्यान नहीं योगियों के द्वारा, योगियों की तरह। It's not so difficult to attain concentration, but it's difficult to attain prema. ध्यान कर पाना इतना कठिन नहीं जितना कठिन कृष्ण प्रेम प्राप्त करना। But inattentiveness is an offense, so we have to be very attentive while chanting. लेकिन हाँ, ध्यान पूर्वक जप न करना एक अपराध है, इसलिए ध्यान पूर्वक जप करना चाहिए। So we have to leave aside everything that can divert our attention. इसलिए जप करते समय उस हर वस्तु को, उस हर कार्य को जो हमारे मन को भटका सकता है, हमें अलग कर देना चाहिए। So what can divert our attention? तो क्या क्या वो चीज़ है जो हमारे मन को भटका सकती है जप के दौरान? What are the factors that are diverting our attention from the holy name? क्या क्या वो चीज़ें हैं जो हमारे ध्यान को नाम से हटा सकती हैं? मोबाइल। Yes, mobile phone is the biggest diverting because something happens all the time in this phone, diverts attention very much. तो हमारे में हाँ मोबाइल फोन बहुत ज़्यादा मन भटकाता है, तो इसमें हमेशा कुछ न कुछ आता रहता है, कुछ न कुछ होता रहता है। What else? और क्या? The place it can be a wrong place for chanting. कोई स्थान गलत हो सकता है जहाँ आप जप करने के लिए बैठे हैं। If you are chanting in the kitchen, अगर आप समझ लीजिए रसोई घर में, where our attention will go?
where our attention will go. तो हमारा ध्यान कहीं और जाएगा, It will go to different preparations and how I will cook. And so अलग अलग लोग अलग अलग कार्य कर रहे हैं रसोई में, तो वहाँ पर ध्यान जाएगा। if we are chanting in a sleeping room, अगर हम वहाँ जब कर रहे हैं जहाँ पे कोई सो रहा हो, we would think, oh, let's take rest. आपको भी लगेगा मैं भी सो जाऊँगा। Uh, if we are chanting on the street, अगर आप सड़क पर जब कर रहे हैं, so many objects are there. इतने सारे वस्तुएं हैं आपको भटकाने के लिए मन को। So for a conditioned soul, it's important to choose proper place for तो chanting. एक बद्ध जीव के लिए बहुत जरूरी है कि वो एक उपयुक्त स्थान को चुने जहाँ पर वो जप करे। Which place is the best? तो कौन सा स्थान सबसे अच्छा है जप करने के लिए? Yes, temple room is the best place. मंदिर सबसे अच्छा स्थान है। In the seventh canto, chapter 14, verse 28, it is said that any devotional service performed in the place where the deities are installed and worshipped with love and devotion is magnified how many times? Yes, 1,000 times is magnified. Chapter 14. सन 7 अध्याय 14 श्लोक संख्या 28 में बताया गया है कि जिस स्थान पर भगवान के भक्तों की प्रेमपूर्ण सेवा होती है, उस स्थान पर अगर कोई भी भक्ति का कार्य किया जाए तो उसका परिणाम 1000 गुना ज्यादा होता है। Yeah, so one round chanted in the temple room, it's like 1,000 rounds chanted somewhere else. तो इसका अर्थ है कि आप मंदिर में भगवान के स्थान पर अगर एक माला जप करते हो तो कहीं और 1000 माला जप करने का परिणाम प्राप्त होगा। So to chant 1,000 rounds, you have to chant like 60 days. अगर आपको ऐसे 1000 बार 1000 माला करनी हो तो आपको 60 दिन लगेंगे। If you are chanting 16 rounds, 60 days, it's 1,000 rounds. अगर 16 माला 60 दिन के लिए करो तो 1000 माला होगी। So in 10 minutes, you can get same result like 60 days chanting. और यहाँ पर अगर आप 10 मिनट एक माला करते हो तो उतना परिणाम मिल जाएगा जो आपको 60 दिन में मिलता है। So if you want to get this result, you have to chant in the temple room. अगर आपको भी ऐसा परिणाम चाहिए तो आपको मंदिर में जप करना चाहिए। Liberated soul, he can chant anywhere. He's with the Lord, so he's getting same result in any place. जो मुक्त आत्मा है वो कहीं भी जप कर सकता है, उसको एक ही परिणाम मिलेगा। But for conditioned souls, it makes difference where the place. लेकिन बद्ध जीव आत्मा के लिए ये स्थान सबसे अच्छा स्थान है। So if you have an opportunity to chant in the temple room, it's the best. अगर आपको अवसर मिलता है कि मंदिर में आकर जप करो तो इससे अच्छा और कुछ नहीं। Also, in this 14th chapter, it is said that any devotional service performed in the place where there are devotees of the Lord and where the best of devotees, Tulasi Maharaj, it's magnified many times. और उसी अध्याय में बताया गया है 14वें अध्याय में कि जिस स्थान पर भगवान के भक्त उपस्थित हैं वहाँ पर भक्ति करने से भी बहुत गुना लाभ मिलता है और तुलसी महारानी भक्तों में श्रेष्ठ है। So if you don't have an opportunity to chant in the temple room, you can chant with devotees near to you, or you can chant in the presence of Tulasi. और अगर आप मंदिर में आकर जप नहीं कर सकते तो आप अपने घर में कर सकते हो, तुलसी महारानी निकट बैठकर कर सकते हैं। So we can use these factors that are magnifying the power of devotional service. तो हम इन कार्यों का लाभ ले सकते हैं जिससे कि हमारी भक्ति की शक्ति बढ़े। And also we should learn this art of hearing. साथ ही साथ हमें ये सुनने की कला को सीखना होगा। We should learn how to hear the holy name. ये कि हम भगवान के नाम को कैसे सुनें, Because we are used to hear our mind. क्योंकि हमें एक अलग चीज का अभ्यास है, हम अपनी बुद्धि सुनते हैं।
Although the mind is a material element, he is not a living entity. We are so attached to hearing him that we could not leave him alone, and we are hearing him instead of holy name. मन एक भौतिक तत्व है, उसमें कोई प्राण नहीं, लेकिन हम उसको सुनने के इतने आदी हो चुके हैं कि हम मन की बात भी ज्यादा सुनते हैं, बिना भगवान के नाम को नहीं सुनते। So mind is a machine. तो मन जो है यंत्र है, It's not a living entity. उसमें प्राण नहीं है। And this machine is working well when it's working. और ये मन जो यंत्र है वो कैसे कार्य करता है, कब कार्य करता है? What gives this life to the mind? मन को जीवन शक्ति कहाँ से मिलती है? पूछ लेना। Attention. Yeah. तो मन को वो जो प्राण है, भोजन है, वो मिलता है ध्यान से। Mind is working when you divert your attention to him. मन जब कभी कार्य करता है जब अपने ध्यान को मन की ओर केंद्रित करते हैं। He is not independent. मन स्वतंत्र नहीं है। So, when your attention is on the holy name, mind cannot work. तो अगर हमारा मन को हम भगवान के नाम पे लगा देंगे, तो मन काम करना बंद कर देगा। He starts to speak when you divert your attention to him. मन तभी आपसे बात करना शुरू करता है जब आप अपने ध्यान को मन की ओर मोड़ देते हैं। And because we are so attached to our mind for many lifetimes, we are traveling together with him, we are always diverting our attention to him. लेकिन हम अपने मन से इतने आसक्त हैं कि इतने वर्षों से हम उसके साथ हैं, हम हमेशा अपना ध्यान अपने मन की ओर ही रखते हैं। And because our interest for holy name is very low, it's easy to divert attention. और चूंकि हमारा हरि नाम में रुचि बहुत कम है, तो इसलिए मन की ओर ध्यान ज्यादा लगता है। So we have to increase our interest in holy name. इसलिए हमें हरि नाम में रुचि बढ़ानी है। When something is very interesting for us, we are paying full attention to this topic. जैसे कि जब हमारा कोई विषय में रुचि होती है, तो हमारा ध्यान अपने आप उस विषय में जाता है। Like someone coming and he's saying, I know the place where the gold is kept. जैसे कोई अगर आपको बोले कि मुझे कुछ स्थान बताएं, हम बहुत सोना रखते हैं। We will hear with great attention. Yes, please describe me the details, how to go there, how to find this place. तो आप बड़े ध्यान से सुनोगे और बोलेंगे, हाँ बताओ, अच्छे से बताओ, कैसे वहाँ जाएंगे, कैसे सोना मिलेगा। So we are very interested in this topic, so we will hear with great attention. तो क्योंकि आपकी रुचि है उस विषय में, आप बड़े ध्यान से सुनोगे। Or if someone is telling, I know the medicine from all disease, I know how to find this medicine, we will hear with great attention. Yes, I want to cure all my disease. और कोई कहेगा एक दवाई से सारे रोग खत्म हो जाएंगे, तो व्यक्ति बड़े ध्यान से सुनेगा, बताओ मुझे बताओ क्या दवा है। So when some topic is interesting for us, we will hear with great attention. तो जब कोई भी विषय में रुचि होती है, तो हम ध्यान से सुनते हैं। So we have to increase our interest in holy name. इसलिए हमें हरि नाम में रुचि बढ़ानी है। That we will be very interested in hearing the holy name. ताकि हम उसको और अच्छे से ध्यान से सुन सकें। Now it's not interesting for us. अभी हमारे लिए हरि नाम We are chanting because we promised that I will chant. हम इससे जप करते हैं क्योंकि हमने वचन दिया है कि हम जप करेंगे। But instead of hearing the holy name, we are hearing our mind. लेकिन हरि नाम को सुनने की जगह अपने मन को सुनते It's more interesting for us. हैं। वो हमारे He ज्यादा has so many interesting topics to tell us. क्योंकि मन में इतनी सारी बातें हैं बताने की। And because we are attached to this mind, we are hearing with full attention. क्योंकि हम उससे आसक्त हैं, बड़े ध्यान से सुनते भी हैं। So we are losing this chance. We are losing this chance to hear the holy name. और उस कारण से हम इस अवसर को खो देते हैं जो हमें प्राप्त हुआ हरि नाम को सुनने के लिए। If we will hear the holy name for 2 hours, our spiritual progress will be like fast train. अगर हम 2 घंटे के लिए हरि नाम को पूरी तरह से सुने, तो हमारी जो प्रगति होगी वो एक तेज रफ्तार वाली रेलगाड़ी की तरह होगी। But instead of hearing the holy name, we are hearing our mind. लेकिन हरि नाम सुनने की जगह हम अपने मन की बातें सुनते हैं।
our spiritual progress is very little. इसलिए हमारी प्रगति बहुत कम हो रहा है For 2 hours we are hearing to non-devotee. क्योंकि वो 2 घंटे हम एक अभक्त से सुन रहे हैं हमारे मन से सुन रहे हैं Instead of satsanga, we are getting asatsanga सत्संग करने की जगह हम असत्संग कर लेते हैं for 2 hours. 2 घंटों के लिए The little chance for spiritual progress. और इसलिए बहुत कम प्रगति कर पा रहे हैं So, the question is how to increase our interest in holy name. तो अब प्रश्न उठना है कि हम हरि नाम में रुचि कैसे बढ़ाएं So, how we can increase our interest? कैसे बढ़ाएं Yes. Any suggestions? Yeah. Yes, we have to hear every day with full attention Srimad Bhagavatam, Bhagavad Gita, glories of the holy name. तो हमें हर दिन श्रीमद् भागवतम भगवद गीता हरि नाम की महिमा को सुनना चाहिए Any other suggestion? और कोई सुझाव Can associate with devotees who have this connection to holiness. Yes. हमें वो भक्तों का संग करना चाहिए जिनमें हरि नाम की प्रति रुचि है If we are very fortunate we met the person who is attached to the chanting of the holy name, we should hear from him. अगर हम हमारे पास अवसर है कि हम उस व्यक्ति का संग कर सकें जिसमें हरि नाम की प्रति रुचि है तो हमें उनसे सुनना चाहिए Any other? और कोई सुझाव Yes, we should continue chanting. हमें अभ्यास करते रहना चाहिए और ज्यादा Abhyasana tu kauntaya vairagina chakrihyate. Krishna said. कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं कि अभ्यास करना चाहिए Yes, it's very important to make an effort. कि हम प्रयास करते रहें ये बहुत जरूरी है And we should pray. और साथ ही साथ हमें भगवान से प्रार्थना करना चाहिए My dear Shri Radha Giridhari, I don't have any attachment for the holy name. Please give me this opportunity to hear at least for 2 hours the holy name. तो हम श्री श्री राधा कृष्ण से प्रार्थना कर सकते हैं कि ये प्रिय श्री श्री राधा कृष्ण मेरे मुझमें कोई रुचि नहीं है हरि नाम के प्रति और मैं ध्यान पूर्वक सुन नहीं पाता हूँ तो मैं 2 घंटा के लिए आपके इस नाम को सुन सकता हूँ Yes, we have to make an effort and we should pray. तो हमें प्रयास भी करना है साथ साथ भगवान से प्रार्थना भी करना है Any other suggestion how we can increase? Yes. We should approach a bona fide spiritual master. तो उनका कहना है कि हमें एक प्रमाणित गुरु के पास जाना चाहिए Yes, it's very important. वो भी बहुत जरूरी है Initiation means that spiritual master gives our blessings to chant without offenses. तो जब दीक्षा होती है उस समय हमें गुरु महाराज से कृपा प्राप्त होती है कि हम हरि नाम को बिना अपराध के ले सकें For chanting Namaparat, we don't need initiation. नाम अपराध जप करने के लिए दीक्षा लेने की आवश्यकता नहीं है We can chant Namaparat for millions of lives. आप करोड़ों वर्षों के लिए नाम अपराध जप कर सकते हैं Bahu Janma Kare Yadishravana Kirtan. बहुत सारे जन्मों के लिए It is said in Chaitanya Charitamrita, we can chant millions of lives Namaparat, but we will not get love of Godhead. चेतन चरितार्थ में कहा गया है कि आप लाखों करोड़ों जन्मों के लिए भी अगर नाम अपराध कर लेते हो नाम अपराध के साथ नाम जप करते हो तो आपको कृष्ण प्रेम नहीं मिलने वाला So initiation means we are receiving these blessings for inoffensive chanting. तो दीक्षा का अर्थ है कि हमें कृपा प्राप्त हो रही है कि हम बिना अपराध के नाम जप कर सकते हैं So there are many factors that can increase our interest in holy name. तो ऐसे बहुत सारे कारण हैं जिससे कि नाम जप में रुचि बढ़ सकती है
We can make a list. आप उनकी सूची बना सकते We can write down this list. हैं, आप कहीं पर लिख सकते हैं। And when we are feeling that lack of taste for chanting, we can look at our list, what I can do to increase. और जब भी हमें हरिनाम में रुचि की कमी महसूस हो तो हम सूची को पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं कि कहाँ मुझे कार्य करना है। Because when we are losing the taste, usually we don't remember what we can do to increase. क्योंकि बहुत बार जब हमारा रुचि चला जाता है हमें याद नहीं आता कि मुझे क्या करना चाहिए, किस बात पर ध्यान देना चाहिए। तो अगर हमें कहीं लिखा हुआ होगा हम उसको देख सकते हैं। So it is important to have this list. इसलिए ये सूची बनाना बहुत जरूरी है। And also we can make a list what distracts me from. और हम एक और सूची बना सकते हैं कि हमें व्यक्तिगत रूप से किस प्रकार से जब करने समय मन में मन भटकता है, मन कहाँ जाता है। And we can continue to make this list when we are getting some realization. और इस लिस्ट में हम लिख भी सकते हैं कि कोई नया नया और कारण जोड़ सकते हैं। If we have found something that helps me to chant attentively, then we can add to this list. और साथ ही साथ अगर हमको कुछ और प्रेरणा मिलती है कि हाँ इससे मेरा जब बढ़ सकता है, अच्छा हो सकता है, हम उस लिस्ट में जोड़ सकते हैं। And the list of what is distracting me, we have to reduce. और जो सूची है जिसमें लिखा है कि इस चीज से मेरा मन भटकता है, धीरे धीरे वो सूची कम होनी चाहिए। So what is the time? Oh, we have time for questions. Yeah. प्रश्न पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण महाराज, परिणाम आप यहाँ पे वर्षों की तरह सेवा होती है, यहाँ पे हरिनाम सेवा, हरिनाम जप से आध्यात्म पुण्यमी। मेरा ये प्रश्न था, कोई कोई विभूति कहते हैं कि सेवा भी करते हरिनाम भी करते, भागवत में जो हरिनाम जप करते, तो इसका क्या परिणाम पड़ेगा? और चंडी का सेवा भी करता है, परिणाम भी लेता है, भागवतम कला सुनने की सेवा करता है, तो उनको कितना बड़ा परिणाम मिलेगा? Is asking that you said if someone is chanting holy name in a place where deity is worshipped, you get 1,000 times more. So, what is the result of someone who is doing chanting along with other service like worshipping the deity and chanting, or sitting in the Bhagavatam class and chanting? So, for how you consider that is? Chanting has to be like one activity. When we are chanting, we should chant. महाराज जी कह रहे हैं कि जब हम जप करते हैं हमें तो जप ही करना चाहिए। There are rare cases when one is so much attached for the chanting holy name, he can stop. He's chanting everywhere when he is eating, when he is sleeping, when he is worshipping the deities. जब हरिनाम में बहुत ज्यादा रुचि हो जाती है, जो कि एक बहुत ऊंचा स्तर है, तब कोई भक्त हर समय हर स्थान पर जप कर सकता है, खाते समय, सोते समय, अच्छा की उपासना करते समय, किसी भी समय। Like maybe you was seeing this video how Gopal Krishna Maharaj was worshipping in his dream. जैसे कि आपने कोई वीडियो देखा होगा परम पूज्य बालकृष्ण गोस्वामी महाराज का कि वो शयन करते हैं और उस समय भी वो अपने स्वप्न में या भगवान की उपासना करते हैं, चंद्र की उपासना करते He has this attachment. हैं, तो इसको बोलते हैं आसक्ति। But if we are not on this level that we are so attached, we have to leave time like 2 hours for concentrated chanting. तो अगर हमारा मन इतना आसक्त नहीं है तो हमें 2 घंटा लगातार निकालना होगा जब के लिए ही, उस समय और कुछ नहीं कर सकते। So 16 rounds means we have to
do it like in one row, it's better. तो इससे जो 16 माला है वो हमें एक ही साथ करना है, 2 घंटा एक साथ। The extra rounds we can chant anywhere else. जो आप उसकी बाद में करते हो, एक्स्ट्रा करते हो 16 से ज़्यादा, वो आप कहीं पर भी, कभी भी, कैसे भी कर सकते हैं। Jai Maharaj, sometimes when we do the chanting, it goes very smoothly and effortlessly, and we do extra rounds. But someday it's very difficult and we struggle. So how to ensure that we do always smoothly and effortlessly? Can translate. प्रभु जी का प्रश्न है कि कभी-कभी हम जब करते हैं तो बहुत अच्छे से होता है और कभी-कभी बहुत संघर्ष करना पड़ता है। Yes, as long as we are under the influence of different modes, our chanting will go like this. इसका कारण है क्योंकि हम गुणों के प्रभाव में हैं, प्रकृति के 3 गुण। इसलिए कभी-कभी उतार आता है, नीचे उतरते कभी चढ़ाव आता है। So sometimes we are chanting very attentively. इसलिए कभी-कभी हम बहुत ध्यानपूर्वक जप करते हैं Another day we don't have any taste. और किसी और दिन हमें कोई रुचि नहीं होती। But we have to continue our chanting लेकिन हमें उस प्रयास करते रहना and we should pray. और हमें भगवान से प्रार्थना करनी है My dear Lord, today I don't have any taste. Please help me. कि आज मुझे कोई रुचि नहीं बन रही, आप प्लीज मेरी सहायता करें, कृपया मेरी सहायता करें। And if we are chanting every day, at least 16 rounds, और अगर आप प्रतिदिन 16 माला करते हो, after some time these waves will become smaller. तो जो उतार चढ़ाव अनुभव कर रहे हो, जिसमें बहुत अंतर है उतार और चढ़ाव के बीच में, तो वो तरंगें छोटी-छोटी होती जाएंगी, कम होती जाएंगी। At the beginning, it's very difficult. Sometimes we are chanting 16 rounds, sometimes no rounds. जैसे शुरू में ऐसा होता है कि आप 16 माला जप कर रहे हो, किसी दिन आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, तो बहुत ज़्यादा अंतर आ जाता है। But after some time, it will. लेकिन कुछ समय बाद उसमें एक स्थिरता आ जाती है। We have to continue तो इसलिए हमको प्रयास बनाए रखना है and pray to the Lord. और भगवान से प्रार्थना करना है। Thank you, Maharaj. My question is that's why you explain, chanting in the temple is the best effect for chanting. And my question is, the people who have temple at home, that will same effect if they have temple at home, the chanting over there, they can come because they are staying far away from the temple. The same effect will be there. Temple, of course. प्रभु जी का प्रश्न है कि आपने कहा मंदिर में आकर जप करने से ज़्यादा लाभ होता है। अब किसी का घर मंदिर से यदि बहुत दूर है, लेकिन उसके घर में मंदिर है, तो वहाँ पर जप करने से क्या उतना ही लाभ मिलेगा? Special power in the temple is because the worship is very, very concentrated, very strict, very regulated here. मंदिर में लाभ ज़्यादा मिलेगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर अर्चना का जो स्टैंडर्ड स्तर है वो ऊंचा है, इसलिए यहाँ पर लाभ ज़्यादा मिलेगा। Especially when you are coming to the temple where the Lord is worshipped like 5,000 years, you feel special power just by entering the temple. आप सोचिए कि किसी मंदिर में 5000 वर्ष से अगर भगवान की अर्चना उपासना हो रही है, भक्ति हो रही है, पूजा हो रही है, उस मंदिर में प्रवेश करने मात्र से आपको उसका अनुभव होता है। Because even the walls, they are filled with the power of the holy name. क्योंकि उस मंदिर के दीवार तक भगवान के नाम से भर गई है। So the temple is always better. इसलिए वो स्थान बहुत अच्छा है। But we can create same atmosphere in the home लेकिन हम वैसा ही माहौल बनाने की कोशिश कर सकते हैं घर पर। because Mathura Vasa is one of the 5 most powerful limbs of devotional service. क्योंकि मथुरा वास
भक्ति के अंगों में 5 अंगों में एक है जो भक्ति में बहुत ज़्यादा सहायता देती है, शक्तिशाली अंग है। So Srila Prabhupada is giving a recommendation how create this atmosphere at home. इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि हमें वो माहौल अपने घर पे भी बनाना चाहिए। It's Madhya Lila of Chaitanya Charitamrita, chapter 1. Chapter 1. चैतन्य चरितामृत मध्य लीला अध्याय 1 है। Advaita Acharya has invited Lord Chaitanya to his home. अद्वैत आचार्य ने चैतन्य महाप्रभु को अपने घर पर निमंत्रण दिया है। And in one purport, Srila Prabhupada is saying that every householder has to invite devotees to his home. और प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं कि प्रत्येक गृहस्थ को अपने घर में वैष्णव को निमंत्रण देना चाहिए। They should chant holy name and discuss Krishna Katha for 3 hours, he said. और उनको घर पर 3 घंटे के लिए हरिनाम करना चाहिए और हरि कथा करनी चाहिए And take prasadam. और प्रसाद सेवन। And this place will be completely purified if it's done regularly. और अगर ऐसा बार-बार किया जाएगा, निरंतर किया जाएगा तो उस स्थान का शुद्धिकरण हो जाएगा। And it will become a holy place. और फिर वो भी एक तीर्थ बन जाएगा, पवित्र स्थान बन जाएगा। And it will be very auspicious to stay in this place. और उस स्थान पे निवास करना बहुत ही मंगलकारी है। It will become Madhura Vasa to stay in this place. तो वो भी मथुरावास जैसा है। And opposite, if no devotees are coming to your home, और लेकिन उसके विपरीत कोई भक्त हमारे घर पे अगर नहीं आते हैं, no kirtan is there, कोई कीर्तन नहीं होता है, no prasad is कोई distributed. प्रसाद वितरण नहीं होता है, So it's ordinary material place. फिर वो एक सामान्य भौतिक स्थान ही है। It will be very difficult to make spiritual progress in such place. और वैसे स्थान में फिर आध्यात्मिक उन्नति करना बहुत कठिन है। There is a way how to create this atmosphere. इसलिए बहुत जरूरी है कि ऐसा माहौल बना सके। And Srila Prabhupada has described practical steps. ऐसे प्रभुपाद जी ने बहुत ही व्यवहारिक तरीके बताए हैं जिससे कि हम भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। How can we chant more effectively? उनका प्रश्न है कि हम ध्यान पूर्वक चल कैसे। We have to prepare from evening. Start preparation from evening. तो महाराज जी कह रहे हैं कि हमें पिछले दिन के शाम से ही उसकी शुरुआत कर देनी चाहिए, प्रयास करना, So तैयारी करनी। what we are doing in the evening, we will think of that in the morning. जो हम शाम को सोचेंगे, तो करेंगे, उसका प्रभाव हमने दिन सुबह पड़ेगा। Like if you are staying at home and you are watching some movies in the evening, you will see these movies in the morning in your mind. तो अगर आप शाम को अपने घर पर बैठकर कोई मूवी देख रहे हो, तो सुबह आपको वही चीज अपने मन में चलती हुई दिखेगी। You will try to chant, but you will see the movie. जब आप चल करोगे, मन में मूवी चलेगी। So it's very important what we are doing in the evening. तो इससे बहुत जरूरी है इस पर ध्यान देना कि हम शाम को क्या करते हैं। So Srila Prabhupada has recommended us particular evening program. इसलिए प्रभुपाद जी ने हमें एक सायंकाल का प्रोग्राम दिया है। To have Gora Aratik, गौर आरती, Kirtan, कीर्तन करना, to hear Bhagavad Gita, भगवद गीता सुनना, to hear Krishna book and कृष्ण पुस्तक पढ़ना, take a glass of milk. सारे दूध ग्लास का दूध पीना। Srila Mukunda Goswami is now preparing scientific research about importance of taking milk every day. Yes. परम पूज्य मुकुंद गोस्वामी महाराज एक शोधन कर रहे हैं, शोधन कार्य कर रहे हैं, जिसमें प्रतिदिन दूध पीने के लाभ क्या है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से वो प्रस्तुत करना चाहते हैं। Because many scientists are saying that it's not good for old people to take milk. क्योंकि ऐसे बहुत सारे वैज्ञानिक हैं जो
वृद्ध लोगों को दूध नहीं पीना चाहिए। He is now 82 years old, Mukunda Maharaj. महाराज जी मुकुंद गोस्वामी महाराज जी 82 वर्ष के हैं He is staying in the farm और वो एक फार्म में रहते हैं and he is taking milk every day, और every night. और वो प्रति रात को दूध पीते हैं And he now engaged some scientists. They will do research and they will publish the results. और फिर उन्होंने कुछ वैज्ञानिकों को कार्य में लगाया है कि वो शोधन करें और कुछ इस प्रकार से पेपर पब्लिश करें To show to everyone that it's important to take milk, cow's milk. ये दिखाने के लिए सबको कि गाय पीना बहुत जरूरी है So there are many factors that can influence our chanting. तो ऐसे बहुत सारे कारण हैं जिससे कि हमारा जप सुधर सकता है We have to increase the mode of goodness. हमें सत्वगुण को भी बढ़ाना होगा We have to take bath, स्नान करना होगा to wear fresh clothes, सफेद अच्छे कपड़े साफ कपड़े पहनने होंगे to put the tilak. तिलक लगाना होगा In the Shastra, there are so many verses describing the glories of tilak. शास्त्रों में इतने सारे श्लोक हैं जो तिलक लगाने के महत्व को बताते हैं Any spiritual activity is magnified many times if you are wearing tilak. कोई भी कार्य अगर आप कर रहे हो भक्ति में कार्य और उस कार्य में आपने तिलक लगाया हुआ है तो भी उस कार्य का जो महत्व है बहुत गुना बढ़ जाता है And also we can chant some verses that are giving us an importance of chanting. और साथ ही साथ हम बहुत ऐसे श्लोक हैं जिनको कंठस्थ करके उनका उच्चारण कर सकते हैं जिनमें नाम जप की महिमा का वर्णन है Like we are chanting the Sikshashtakam prayers. जैसे कि हम प्रतिदिन शिव शास्त्र का प्रार्थना करते हैं If we are chanting these prayers with understanding what we are chanting, we can be very inspired for chanting. अगर हम इस शिव शास्त्र की प्रार्थना का अर्थ समझते हैं तो उस अर्थ के अर्थ द्वारा ही हम बहुत प्रेरित हो सकते हैं नाम जप के लिए And there are specific prayers that are useful in order to chant without offenses. ऐसे कुछ विशेष प्रार्थनाएं हैं जो बहुत सहायक होती हैं निरपराध जप करने के लिए The 7th canto, chapter 5, verse 23-24. सातवें स्कंद में अध्याय 5 श्लोक 23-24 Describing there is a very long purport, like 11 pages purport. बहुत लंबा तात्पर्य है 11 पेज का And Srila Prabhupada is saying, if you want to chant without offenses, you have to chant a verse from the 10th canto, chapter 1, verse 4. अगर प्रभा जी को ध्यानपूर्वक जप करना है तो आपको 10:1-4. आपको 10वें स्कंद का पहला अध्याय का श्लोक 4 उसको उच्चारण करना है Nivritta Tarsha Rupagiya Manat Pavashadrat Shatramino Viramat Kauttamashtaka Gunanodat Puman Virajita Vinapashunat. So Prabhupada is saying that this verse is very useful if you want to chant without offenses. प्रभा जी ने अभी ये श्लोक जो महाराज ने उच्चारण किया ये बहुत ही लाभकारी है अगर आप निरपराध जप करना चाहते हैं And also he is saying in the same purport that one can chant the prayer starting with Nikhila Shruti Mauli Ratnamala. It's Rupa Goswami's Nam Ashtakam prayers. और श्री रूप गोस्वामी ने एक प्रार्थना लिखी है जिसका नाम अष्टक कहते हैं तो एक बार अपने जप को शुरू करने से पहले उस प्रार्थना को इस श्लोक को उच्चारण कर सकते हैं So there are many verses describing the glories of the holy name. You can choose what is inspires you the most and you can chant. तो इस इस प्रकार बहुत सारे श्लोक हैं जो नाम महिमा बताते हैं आप उसमें से कुछ ले सकते हैं और उच्चारण कर सकते हैं It's 9 o'clock. Today is also the appearance day of Gopal Bhatta Goswami. आज श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी का भी आविर्भाव दिवस है He has appeared in Srirangam. और श्रीरंगम में प्रकट हुए Now devotees, they acquired a land when where he was born. अभी भक्तों ने उस स्थान को प्राप्त कर लिया श्रीरंगम में जहाँ पर उनका जन्म हुआ And they installed his murti there.
और वहाँ पर उन्होंने उनके विग्रह की स्थापना कर दी। They have like small village, एक छोटा सा गांव है, very, very peaceful place. शांत शांत वातावरण है। And he met Lord Chaitanya when he was something like 8 years old. जब श्री चैतन्य महाप्रभु वहाँ पर गए थे, गोपाल नंद स्वामी लगभग 8 वर्ष के थे। Because Lord Chaitanya was staying in his house और चैतन्य महाप्रभु के घर में रुके थे for 4 months. 4 महीनों के लिए। And he had an opportunity to serve him. उनके पास इतना सुंदर अवसर था उनकी सेवा करने का। And he became so attached to Lord Chaitanya that he wanted to go with him. और वो चैतन्य महाप्रभु से हो गए कि वो चैतन्य महाप्रभु के साथ जाना चाहते। He wanted to immediately left home and to go with Lord Chaitanya. और वो अपना घर छोड़ना चाहते थे और पीछे पीछे जाना चाहते थे। But Lord Chaitanya told him, your parents are pure devotees चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि आपके माता पिता शुद्ध भक्त हैं, and you should stay with them. इसलिए आपको उनके साथ रुकना चाहिए। And when they will leave the bodies, you can go to Vrindavan. और जब वो अपना देह त्याग कर देंगे तब आप वृंदावन जा सकते हैं। So he was serving them for like 20 years. तो उन्होंने अपने माता पिता की लगभग 30 वर्ष सेवा की। And before leaving the bodies, they gave him blessings to go to Vrindavan. और फिर भक्तों ने उनको अपना आशीर्वाद दिया, कृपा दी कि अब आप वृंदावन जा सकते हैं। So he left for Vrindavan, इसलिए वो फिर वृंदावन चले गए। and he was staying in the place where this Radharaman temple, I think so. और फिर वो उस स्थान पर रुकने लगे जहाँ अभी राधा Yes, his bhajan kuntir was there. There is a tree on which he was keeping his shilas. वहाँ पर उनके भजन कुंज है, एक वृक्ष है जहाँ पर वो अपनी शिलाएं रखते हैं। And he wanted very much to worship the form of the Lord. उनकी बहुत प्रगाढ़ इच्छा थी कि वो भगवान की सेवा कर सकें। So he was praying to Lord Nrsimhadev on Nrsimha Chaturdashi that you manifested yourself from the column. तो उन्होंने नरसिंह चतुर्दशी के दिन भगवान नरसिंह से प्रार्थना की कि आप एक खंभे से प्रकट हो गए। So can you manifest yourself from Shila? तो आप उसी प्रकार क्या इस शिला से प्रकट हो सकते हो। And next day, Lord has appeared from Shila. और अगले दिन ही शिला से राधा रमन प्रकट हो गए। So this is the power of prayer. तो ये प्रार्थना की शक्ति है। So if you pray in the proper mood, we will get results that is there in the Shastra. तो अगर हम अच्छे से प्रार्थना करते हैं तो शास्त्र में जो परिणाम बताए गए हैं प्राप्त हो सकता है। And also he has written many books. और साथ ही साथ उन्होंने बहुत सारे ग्रंथों की रचना भी की। The most famous is Hari Bhakti Vilas. He made it together with Sanatana Goswami. उन ग्रंथों में सबसे विख्यात है हरि भक्ति विलास, जो उन्होंने श्रील सनातन गोस्वामी के साथ रची। Satkriya Sara Deepika, सक्रिय साहित्य का भी है some other books also. और भी विख्यात है। And also he gave these short lines from which Jiva Goswami he made Shad Sandarbhas. और साथ ही साथ श्रील गोपाल गोस्वामी ने कुछ ऐसे वाक्य लिखे जिसके आधार पर जीव गोस्वामी ने षट संदर्भों की रचना की। Yes, he gave only 6 lines, but Jiva Goswami made 6 books. तो गोपाल गोस्वामी ने केवल 6 वाक्य लिखे और जीव गोस्वामी ने उन 6 वाक्यों को 6 ग्रंथों में परिवर्तित किया। And also he gave an introduction to 6 Sandarbhas. और साथ ही साथ उन्होंने षट संदर्भ की भूमिका भी बताई। Hare Krishna. On this we can stop today. यहीं पर समाप्त करेंगे। And I have special Mahaprasad महाराज जी महाप्रसाद काटना चाहते हैं। from the Gaur Nitai worshipped by Gopal Krishna Maharaj. श्रील गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज द्वारा पूजित गौरव में महाप्रसाद को देना। By his blessings, Gaur Nitai are now in Moscow, so we have the fortune to offer them the sadhana.
Hare Krishna, Krishna Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama.